Okay. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शून्य और आई नो फर्स्ट के इस जॉइंट वेबिनार पर, जहां पर आज हम कुछ एआई पावर्ड एआई इस मार्केट को चेंज कर रहा है। सो वी आर वेटिंग फॉर सम पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन। तो हमारे साथ इस टाइम यारोन सर फ्रॉम आई नो फर्स्ट एंड बैन, बोथ आर फ्रॉम आई नो फर्स्ट, जो Hello, everyone. कि एआई बेस्ड स्टॉक मार्केट को। तो कुछ एक 5 मिनट का वेट कर लेते हैं सभी लोगों के ज्वाइन करने के लिए, देन फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे वेबिनार। Hello, Kashaev. How are you? ऑल गुड यारन सर, ऑल गुड। व्हाट अबाउट यू? Very good. Thank you. Very good. नाइस टू सी Hello. यू Hello, अगेन Ben. इन Yep. दिस वेरी एनर्जेटिक वेबिनार फॉर our Indian clients. Right. And I see already people that raising their hands. Guys, please use the Q&A window in order to ask questions during this webinar, and we will try to address uh, as many questions as possible. ओके सो ये शून्य और वेबिनार का एक जॉइंट, शून्य और आइनो फर्स्ट का एक जॉइंट वेबिनार है, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एआई पावर्ड रिसर्च के बारे में, एआई पावर्ड प्रोडिक्शन के बारे में। सो आपकी कोई भी आइनो फर्स्ट से रिलेटेड, तो आप अपनी क्वेरी जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्यूएनए सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो है वो हम इस वेबिनार के लास्ट में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब दें। तो ये जो वेबिनार है ये आइनो फर्स्ट और शून्य मिलकर होस्ट करते हैं, जहां पर एआई जो आज की दुनिया की एक नीड बन चुका है। जो बात करें हम हर एक सेक्टर की, तो हर जगह आपको एआई का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल्स में आजकल रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, ड्राइवर कार आ चुकी हैं जो कि एआई की चीजों में हम एआई देख रहे हैं। तो फिर हमारा फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट इस टेक्नोलॉजी से पीछे कैसे रह सकता है? तो स्टॉक मार्केट को एआई देने का काम किया है आइनो फर्स्ट ने। तो यारोन सर हमारे साथ हैं, जो कि को फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं ऑफ द आइनो फर्स्ट, एंड मिस्टर बैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च है, सो हेड ऑफ एडवाइजरी एंड रिसर्च एट आइनो फर्स्ट। और मैं केशव कुल्लर, शल्य की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं। यारोन सर, ओवर टू यू। Thank you. Yeah. Thank you very much. Ben, let's start. Should we start with the disclaimer, Ben? Yeah, and hello to everybody. Welcome to the webinar. Today we're going to talk about, of course, I know first algorithm that is embedded in the Finvazia platform. We're going to talk about some past forecasts, and we'll see even a future forecast about what the algorithm thinks about the Indian market. We're going to cover small caps, mid cap, large cap, talk about the indices, and see what actually is the most interesting thing in the markets by the I know first algorithm.
But before that, we're going to do a quick disclaimer that first, the daily market forecast does not provide personal investment or financial advice to individual or act or personal, financial, legal, or institutional investment advisors, or individually advocate for purchase or sale of any security or investment for the use of particular financial strategy. All investing, stock forecast, and investing strategies, including this webinar, are include with the risk of loss for some or even all of your capital. Before pursuing any financial strategies discussed on this webinar, you should always consult a licensed financial advisor. And after this quick disclaimer, we can start the webinar. Okay, great. And we have a very interesting webinar today. And I see some interesting questions in the Q&A. We will try to address all those questions during the webinar. And it will be nice also if you guys will write down what do you think about NVIDIA earnings that are going to be published today, whether you think that the markets will go up tomorrow after the earnings are going to be published. And how do you see the upcoming days from now on? And we will get back to it during the webinar. So I will start with a quick introduction of I Know First. I Know First, we are an AI company. Our main solution is a predictive algorithm that generates daily forecasts for the financial market and identifies the most promising investment opportunities. We are utilizing artificial intelligence, more specifically deep learning, artificial neural network, genetic algorithms to predict the financial market. Our predictive algorithm is generating daily forecasts for over 13,500 assets from different asset classes: equities, ETFs, commodities, currencies, indices, with daily forecasts for multiple timeframes, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global predictive algorithm. We are generating daily forecasts for over 50 global stock exchanges in the very same time, including the stock exchanges in the US, Europe, but also the stock exchanges in India, including NSE and BSE from the stock level, and we're going to see it in the webinar today. Okay. Okay. तो एक क्विक डिस्क्लेमर कि जो भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज टोटली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। आपको हमारा मोटो है ये बताना कि किस तरह एआई आपकी हेल्प कर सकता है इस मार्केट में, और किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर रिसर्च हम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करने वाले इस वेबिनार में। बट हाँ, एआई किस तरह से आपकी करता है और एआई किस तरह से रिसर्च करने को लेने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। और वहीं हम बात करें अगर आई नो फर्स्ट की, तो आई नो फर्स्ट जो है आपके लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है और ओवर 13,500 एसेट्स के ऊपर डेली फोकस देता है, जिसके अंदर स्टॉक्स, ईटीएफ, कमोडिटीज, करेंसीज, इंडाइसेस, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आपको सजेस्ट करता है। ओवर 50 ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पर, इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में इंडियन मार्केट में भी लिस्टेड करीब 1500 से ज्यादा कंपनीज के ऊपर डेली आई नो फर्स्ट अपनी फोकस देता है। कौन से स्टॉक्स जो हैं वो पोटेंशियल रखते हैं अपसाइड जाने का या फिर डाउन साइड जाने का, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको आई नो फर्स्ट पर देखने को मिल जाती है। ओवर टू यू यार। Thank you. Yeah, Ben, what do we see here? Yeah, I want to, before we're going to start, we're just giving you a glimpse of the algorithm abilities. This is the forecast from today from the Indian market.
we can see three stocks that the algorithm predicted for different time frames that was generated today. We can see a 3 days forecast for Sequent Scientific that already jumped today with 2%. We saw Pansari developers that also was been in a long position by the algorithm for a 3-day period with a strong signal that we don't want to talk about it later on. And this stock jumped 7.5% today. And we have even a long-term forecast of 1 month for a persistent stock that jumped just today with 4%. And this is just from a quick example from today's forecast for different time frames. We're going to talk about it. We're going to talk how we're going to use it. But just to give you a taste of how the algorithm can predict and identify opportunities from the Indian market. Okay. Over to So you, Kish. आज बात करने वाले हैं हम जब एआई की, तो आज के फोकास्ट की अगर हम बात करें, आज ही के अगर फोकास्ट की हम लोग बात करें तो स्टॉक जो सजेस्ट किए थे एआई ने, कुछ स्टॉक्स थे लाइक परसिस्टेंट, सीक्वेंट और पंसारी। सो आप देख सकते हैं स्टॉक्स की परफॉर्मेंस सेम जिस दिन प्रेडिक्ट किया उसी दिन। अभी तो अगर हम बात करें कि कितने दिन के लिए प्रेडिक्ट किया गया है, वो चीजें डिफरेंट है। वैसे भी अगर हम बात कर रहे हैं एआई की या आइनोफर्स्ट की, तो हम कभी भी इंट्राडे में आपको कोई भी सजेशंस नहीं देते हैं। मिनिमम टाइम फ्रेम जो होता है वो 3 डेज का होता है। 3 डेज, 14 डेज से लेके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, या अगर हम बात करें 1 ईयर के टर्म में, तो स्टॉक की क्या मूवमेंट रह सकती है। सो एआई का यूज करके हम कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका यूज हम अपनी रिसर्च के लिए कर सकते हैं। अभी 1500 स्टॉक्स मैं खुद तो एनालाइज नहीं कर सकता, बट यस, अगर एआई मेरे लिए उनको एनालाइज करके देगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक हेल्प हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं उन स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकता हूं जो इसके एआई के अकॉर्डिंग भी स्टॉक अप जा सकता है। और मेरी रिसर्च भी अगर ये कह रही है कि इस स्टॉक के टेक्निकल्स ठीक लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उसके अंदर अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूँ। सो इट्स मतलब आपकी हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं आपको सक्षम बताएगा ये जानने में कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें मूवमेंट आ रही है। Over to you. Thank you. So I know first, we are based in Tel Aviv, Israel. The I know first predictive algorithm was developed by our unique R&D team that's being led by Dr. Lipa Roitman, one of the leading experts in the field of artificial intelligence, machine learning, deep learning from the Weizmann Institute of Science. Dr. Roitman is leading our unique R&D team that based on basically that includes PhDs, AI and machine learning experts. We have math professor from Tel Aviv University, as well as employees with the background of data science, math, statistics, and also IDF veterans, specifically from the intelligence unit. Ben Rubin, that's going to lead the webinar today, is the head of our advisory services. Used to work for Bank of Poalim, one of the leading banks in Israel. My name is Yaron Golger. I'm the CEO and the co-founder of I Know First. I'm also lecturing at one of the leading universities in Israel in the field of fintech, AI. I'm engineer with EMBA. The I Know First predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, family offices, banks, and brokerage firms, as well as retail clients and high net worth individuals from all over the world. In this list, you can find leading hedge funds, leading family offices, banks, and also investment firms that
basically we have built together and developed together several investment products that utilizing our technology. We have recently built the first AI-powered mutual fund. It's being listed in the Tel Aviv Stock Exchange. And also, there are several companies that we basically using our technology in order to manage their funds in a systematic way. ओके सो अगर बात करें हम इस प्रोडक्ट की, तो किसने ये प्रोडक्ट बनाया है और किस तरह से ये हेल्प कर रहा है, तो एक वो सारी नॉलेज भी हमारे लिए जरूरी होती है। तो डॉक्टर लिपा राइटमैन जो है वो इसके चीफ साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। मिस्टर यारोन, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ है इनोफोर्स के, और साथ ही ये लेक्चरर भी हैं, लेक्चरर ऑफ फिनटेक एट जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ में हमारे साथ बैन है, जो कि हेड ऑफ एडवाइजरी है, और पूरी यूनिक एंड रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम है इनोफर्स्ट की, जिन्होंने आपके लिए ये प्रोडक्ट बनाया है। और फ्यूचर में भी इस प्रोडक्ट को इतना एनहेंस करेंगे कि ये हमारे लिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट की ढूंढ कर लेकर आए। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज यार सर। सो बात करें अगर क्लाइंट्स की, तो प्रोडक्ट कितना ट्रस्टवर्दी है ये पहचान होती है उसके क्लाइंट्स से। तो नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल, विशिया, सी कैपिटल, टोटल कैपिटल, ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि, या हम कहें तो हेज फंड्स हैं, जो कि इनोफर्स्ट को यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। बल्कि मिताओ जो है वो तो एक एआई बेस्ड म्यूचुअल फंड का मतलब आप कहें तो एक पूरी एएमसी बनी हुई है, जो पूरा एक फंड है जो कि एआई बेस्ड फंड है, और एआई की हेल्प से ही वहां पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर द इंडियन मार्केट। और शून्य के साथ एज अ रिटेल कैटेगरी में भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और जो भी सर्विसेज हैं वो सिमिलर हैं सभी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो फंड हाउसेज हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है और रिटेल क्लाइंट्स को कुछ अलग मिल रहा है, कुछ कम मिल रहा है। बट हाँ, जो चीजें वहां पे प्रोवाइड हो रही है वही चीज यहाँ पर भी मिल रही है। बस फर्क है हमारी रिसर्च का, कि हमें खुद रिसर्च करना होगा, और जो शॉर्टलिस्टेड शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, उनको हमें मुताबिक भी अगर वो सही है तो हम अपनी पोजीशन इसमें ले सकते हैं। ओवर टू यू। Okay, the solution that you're about to see has received several awards, international awards, including from UBS, Entity Data in Japan, and also from the Geneva Wealth Tech Forum as the best AI-powered solution for the wealth tech industry. Let's continue, Ben. And yeah, here you can see several photos from those events. Who knows who is the guy on the left? Please use the chat. Okay, I see some interesting answers. Yes, this is the CEO of NVIDIA. All the world is talking about the earnings that coming up later on tonight. And we were visiting several events, and we were attending several events in India. We love the Indian market. Ben specifically is in charge of the Indian market and visited India. So what do? We are providing two main solutions to our clients. On one end, we are providing a daily forecast for the Indian market, more than 1,500 Indian scripts, small caps forecast,
focus for the small cap stocks from India, mid cap stocks from India, and also large cap stocks in India. Basically, the algorithm is identifying daily opportunities from those three segments from the Indian market, opportunities, stock opportunities for the short term, stock opportunities for the midterm, and also opportunities for the long term. There are 6 timeframes that the algorithm is generating daily forecast for. On top of that, we have developed several systematic trading strategies. Those strategies are building basically portfolios and also creating a rebalancing of the portfolio. And we are going to discuss it later on in this webinar as well. We have very interesting product for that as well, new product. So basically, by using the daily forecast, it's possible to identify opportunities in the Indian market by utilizing artificial intelligence. This is the main product that we are going to showcase today in this webinar. बात करें कुछ अवार्ड्स की जो कि आइनो फर्स्ट को मिले हैं. सो इट्स वर्ल्ड टेक 100 कंपनी जो कि मतलब हिंदुस्तान की टेक कंपनीज जो वर्ल्ड की जो टॉप 100 टेक कंपनीज हैं उसके अंदर आइनो फर्स्ट शुमार है. साथ ही बात करें बेंजिंगा की तो फिनटेक अवार्ड मिला हुआ है बेंजिंगा से. उसके बाद जिनेवा वेल्थ टेक अवार्ड 2019 के विनर है. और आइनो फर्स्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा टूल बनाने के लिए जो कि एआई के जर्नी को हेल्प आउट करता हो कि कैसे थोड़ा कुछ भी ईजनेस अगर हमें मिले. क्योंकि बात होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है. तो जब पैसा इन्वॉल्व है तो हमें एक सोर्स, ऐसा रिलायबल सोर्स चाहिए होता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें. और ट्रस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आइनो फर्स्ट के एआई ने बोल दिया है कि आप किसी XYZ स्टॉक के अंदर बाइंग कर लो तो आप बाइंग कर लो. बट हाँ, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि अगर आइनो फर्स्ट का टूल हमें बता रहा है कि कोई स्टॉक अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखता है, सो हम उसके अंदर ये कर सकते हैं कि हम अपनी रिसर्च करके देख सकते हैं. तो एटलीस्ट हमें स्टॉक शॉर्टलिस्ट होके मिल जाते हैं कि 1500 में से अगर हमें 20 स्टॉक्स मिल गए और उन 20 स्टॉक से ऊपर हमें अपनी रिसर्च लगानी पड़ रही है तो 20 स्टॉक को ही रिसर्च करना है. उसके अंदर से हमें 3-4 स्टॉक्स मिल गए तो इट्स वेल एंड गुड. और डेली बेसिस पर ही अपडेट होता है. रोज मार्केट ओपन होने से पहले आपको डेली फोरकास्ट आ जाता है. और अवार्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइनो फर्स्ट इंडिया में भी आया था और बीएससी में अपनी प्रेजेंटेशन इन्होंने दी थी कि किस तरह से हम एआई के थ्रू इंडियन मार्केट्स की हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टर्स की कर सकते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ा आसान बना सकते हैं. सो अब बात आती है कि होता क्या है, करते क्या है ये. तो डेली फोरकास्ट देते हैं आपको कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो अपसाइड या डाउनसाइड जा सकते हैं. जो हमें स्टॉक स्क्रीन में दिखाई देते हैं वो अपसाइड स्टॉक होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है ऊपर की तरफ जाने का, और जो रेड में मार्क होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है डाउन साइड जाने का. सो ऐसे स्टॉक्स हमारे लिए फाइंड आउट करने का काम करता है आइनो फर्स्ट. और हम आइनो फर्स्ट की हेल्प से पोटेंशियल स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं. ओवर टू यू अरुण. Okay, thank you. The INO first predictive algorithm includes 3 main components. All those components are available to Shoonya users. The first component is helping Shoonya users basically to identify the most promising investment opportunities and stock picks from the Indian market on a daily basis across different verticals, small caps, mid caps, and also large caps. So basically, you are getting the top stocks for the different time frames, and you can use it in order basically to invest.
The second component is providing you stock market intelligence. You can use the AI algorithm in order to identify leading sectors within the Indian market, to receive insights regarding leading indices in the market, and also to receive insights regarding sectors and indices that you should basically avoid. And the last component, that is also super exciting in my opinion, you get the opportunity to receive a customized forecast for your current portfolio. So let's say you have a portfolio with specific stocks such as Tata or any other Indian stocks. You can use the AI algorithm in order to receive a custom forecast for your own portfolio, and we are going to show you later on in this webinar how you can do it. So basically, how do we do it? What is the process that we are doing in order to generate the daily forecast? It's not a magic, it's science. We are utilizing artificial intelligence in order to do that. Every day, the AI algorithm is collecting quantitative data sets that coming from the entire financial market, the entire global financial market. We are collecting data from 50 different stock exchanges around the globe. We are collecting data that's coming from the interest rate market. We are collecting data that's coming from the commodities market, the currency market. We are basically using any quantitative data set that is out there. We are adding the daily data to our database. We are managing database with historical data. And around the clock, the AI algorithm is learning from the historical data, learning from the combined data, and also from the daily data. And basically, every day, the AI algorithm is building the complex network that exists in the financial market. In the financial market, there are thousands of correlation sets, and the AI algorithm is able to build this complex network on a daily basis without any human intervention. And you guys are receiving the bottom line of this complex process. You are receiving forecast with the best opportunities for the short term, mid-term, and also long term. You can see the timeframes on the right. And this process is basically done on a daily basis. So every day, when you turning on your computer in the morning and logging into the Shoonya platform, you are receiving a fresh forecast with the best opportunities for the different timeframes based on the AI algorithm. बात आती है कि आइनोफर्स जो है उनकी प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम करती क्या है. सबसे पहले तो नेक्स्ट स्लाइड यार आंसर प्लीज. वी हैव कवर्ड दिस वन. यप. सबसे पहले मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, स्टॉक्स, सीटीएफ्स या इंडाइसेस जो कि फ्यूचर में एक अच्छा पोटेंशियल किस साइड मूव करता है, अपसाइड भी जाता है, डाउन साइड भी जाता है. तो उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना कि अगर 50 शेयर आज के दिन में चले तो 50 में से ये होता है कि हम अगर बात कर रहे हैं मार्केट की तो आज जो चल गया वो चल गया, है ना. अब ये नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेगा इस जर्नी को, नहीं करेगा, ये कोई नहीं जानता. पर उनमें ये आइडेंटिफाई करना कि किस किस में पोटेंशियल है उस जर्नी को कंटिन्यू करने का. कोई स्टॉक अगर आज अपसाइड चला गया तो वो आने वाले टाइम में भी अपसाइड जा सकता है या नहीं जा सकता. या कोई स्टॉक है जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है, अब वो उसको जर्नी को कंटिन्यू करेगा, कितने टाइम तक के लिए करेगा, रुकेगा, क्या होगा. तो ये सारी जो इनसाइट्स होती है उसकी पास्ट हिस्ट्री को चेक करना. ये हमें नहीं पता कि कोई स्टॉक 4 दिन चला, 5वें दिन गिर गया, उसके बाद गिरता ही चला गया, या 4 दिन चला उसके बाद चलता ही चला गया. तो ये हिस्ट्री को डिकोड करने का काम करता है एआई, और हमें ऐसी इनसाइट्स प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सके कि स्टॉक कितना पोटेंशियल
है। तो इसके अंदर लीडिंग सेक्टर्स पता करते हैं, इंडाइसेस के ऊपर काम करते हैं, लीडिंग इंडाइसेस कौन कौन से रह सकते हैं, और एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का भी काम करते हैं। तो एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मतलब जैसे जो आपकी होल्डिंग है शून्य के अंदर, उस होल्डिंग्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी क्या प्रिडिक्शंस, उसकी क्या प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसके क्या सिग्नल्स हैं, वो भी आपको आइनो फर्स्ट पर चेक करने को मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड यार प्लीज। या सो अब होता कैसे ये सब चीजें, तो जो भी डेटा प्रोवाइडर्स हैं वहां से सारा फाइनेंशियल डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद 15 साल के शेयर के डेटाबेस के ऊपर काम किया जाता है। अब जो स्टॉक 15 साल से ज्यादा लिस्टेड है उस पर तो 15 साल, और जो उससे कम समय से मार्केट में है तो वो जितने भी टाइम से मार्केट में है उसकी पूरी हिस्ट्री को पूरे लर्निंग और प्रिडिक्शन साइकिल में डाल के और हमारे लिए रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं, और हमें प्रिडिक्शंस बताई जाती हैं कि इन द पास्ट वो चीजें कैसी रही और फ्यूचर में वो चीजें क्या हो सकती हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी लर्निंग साइकिल है इस एआई की, क्योंकि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये सेल्फ लर्निंग टेक्नोलॉजी होती है, खुद से सीखता है और आगे हमें अपने आउटपुट्स देता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में हमें इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक 3 दिन की प्रोडिक्शन सबसे पहले की जाती है, मतलब 3 डेज, फिर 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। ये 6 टाइम फ्रेम में प्रेडिक्शंस देता है कि कौन से स्टॉक 3 दिन में चल सकते हैं, 7 दिन में चल सकते हैं, 14 दिन में चल सकते हैं। इंट्राडे की अगर आप बात करेंगे तो इंट्राडे के लिए आई नो फर्स्ट नहीं है, हाँ इंट्राडे की प्रेडिक्शंस नहीं प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट स्लाइड यार सर प्लीज। Okay. Thank you. या We are combining different AI approaches into one powerful AI algorithm. We are utilizing deep learning, artificial neural network, genetic algorithms, supervised and reinforcement learning. And the goal is to identify opportunities for you guys. How we do it? We are basically separating and focusing on the most predictable assets from the Indian market. We are filtering out the assets that are less predictable from the Indian market, from the BSE and the NSE. And we are using our AI algorithm in order to focus on the most predictable assets from the NSE and the BSE. And out of this universe, we are identifying the best stock picks on a daily basis. सो एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज डीप लर्निंग अप्रोच है, जैसा मैंने आपको बताया। एआई खुद से अपने लर्निंग करता है, खुद की गलतियों से भी सीखता है और खुद की अचीवमेंट से भी सीखता है। अब जनरल सी बात है, अगर एआई ने बोला कि स्टॉक अपसाइड जा सकते हैं और अपसाइड चला गया, ठीक है, तो वो सीख गया कि हाँ ये चीज मैंने बोली थी, ये चीज हुई है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर उसने बोला कि अपसाइड जा सकता है पर नहीं गया, तो वो उसको एज अ गलती करता है और फिर उससे सीखता है कि मुझसे कोई चीज रह तो नहीं गई थी। अच्छा, जब हम मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ये गलती हम भी कर बैठते हैं ना, हमें भी कई बार लगता है कि यार हमें लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, तो कई बार हमसे भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं जहां हमें नुकसान बुक करना पड़ता है। तो ये तो मार्केट में नुकसान होना तो बहुत जायज है कि भाई बाजार में नुकसान होगा ही होगा, अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो एक रिस्क लेके चल रहे हैं कि हमारा कैपिटल लॉस इसके अंदर हो सकता है। पर अगर हम अंधा खेल रहे हैं ना मार्केट में, बिल्कुल ही हमें कुछ पता नहीं है, हम बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के अगर हम चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम बिना सीखे बाइक भी चलाएंगे तो हम कहीं ना कहीं तो उसको ठोक ही देंगे। तो हमें जरूरी है कि हम भी सीखें, उसी तरह से एआई के लिए भी जरूरी है कि वो भी सीखे। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमने इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है कि भाई एआई ने बोल दिया तो बस बोल दो, पत्थर की लकीर नहीं।
हमने देखना है कि अगर उसने बोला है अपसाइड जाने का है तो हम अपनी रिसर्च वैसी की वैसी करेंगे। हाँ, फर्क ये है कि पहले हम 1500 स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे थे, आज हमारे पास रिसर्च करने के लिए 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही हमने रिसर्च करनी है। ओवर टू यू Thank सर। you. Yes, and before just to quickly illustrate again the opportunities that each one of you can receive on a daily basis by just logging to the Shoonya platform and going to the I know first section there. Here we can see 3 stock opportunities that the AI algorithm has identified today. One opportunity is from the 1 month time frame, the first one, and the 2 others are coming from the 3 days time frame, from the short term time frame. We can see the live performance of those assets as we speak. And Ben now is going to tell you how basically to read the numbers that you see on the left below each ticker. But this is just a quick example to illustrate how the AI algorithm basically works in the Indian market. So Yes. now I would like to introduce Ben Rubin, our head of advisory that will provide the insights regarding the algorithm indicators. Over to you, Ben. Yes, so let's go through the forecast and see. It's actually divided into 2 colors. The green colors represent a long position, while the red colors represent short or sell positions. And we can see the symbols inside those squares. And we are using 2 indicators to choose the best stocks. One is the signal. This is the number that is actually located here in the signal line, and it represents the potential movement of this specific asset. The signal is our internal index, and it's actually ranking the entire investment universe. From the stocks that has the highest signal is located on the top left corner of each and every table, and it's going down to the right until the most negative signal that we can see here. That means that this specific asset is supposed to go down in the strongest way. So the signal is actually representing a potential movement of the stock, a potential strength of movement of the stock. And the other indicator that we are using is the predictability. This one is located right here. In this case, in Dixon stock, it's 0.49. The predictability is actually is telling us or represent how good the algorithm can predict the specific asset by using the Pearson correlation measurement. It moves from -1 to 1, while 0 represents 50% probability to this specific asset to move to the predicted direction, while 1 represents 100%. So in both cases, we were looking for higher values of those indicators to get a big movement and also get a good probability that the asset will move to the predicted direction. So when you get this table and when you find it in the Shoonya platform, you should look for highest value in both of those indicators, high predictability, high signal. That will lead to ideal investment. यप। सो हमारे साथ मिस्टर बैन है जो कि हेड ऑफ एडवाइजरी है आई नो फर्स्ट में। और आज हम बात करेंगे हमारे सबसे मेन क्वेश्चंस की, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का आता है कि आई नो फर्स्ट की प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स को रीड कैसे किया जाता है। ये जो डेली फोरकास्ट आई नो फर्स्ट का आ रहा है, इसे समझें कैसे। सो दो पैरामीटर्स आई नो फर्स्ट हमें प्रोवाइड कराता है, वन इज सिग्नल एंड सेकंड वन इज प्रेडिक्टिविटी।
ठीक है, अब किसी भी स्टॉक की अगर हम प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। अब जब हम कह रहे हैं 0 से 1, और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो 0 से 1 में जितना 1 के करीब होगा, ठीक है, चाहे वो 0.99 हो या वो 0.88 हो, 0.78 हो, है ना, तो ये सिग्नल के अकॉर्डिंग मूव करने वाला है। अब अगर सिग्नल आ रहा है किसी स्टॉक का, फॉर एग्जांपल 300, और उसी स्टॉक की प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है 0.8, तो मतलब जब पहले कभी 300 का सिग्नल रहा इन द हिस्ट्री, तो 300 के सिग्नल पर स्टॉक ने लगभग 80% टाइम जो है वो अपसाइड का मूवमेंट दिया, अगर वो सिग्नल ग्रीन का आया है तो। वहीं अगर बात करें हम 0.9 की प्रेडिक्टेबिलिटी थी, 300 का सिग्नल था, तो वो कह रहे हैं कि 90% टाइम जो है वो स्टॉक ने उसी डायरेक्शन में मूव किया है जो डायरेक्शन आई नो फर्स्ट ने प्रेडिक्ट किया है। और अगर किसी की प्रेडिक्टेबिलिटी 1 आ गई तो मतलब 100% है कि वो वैसे ही मूव करता है, लेकिन 1 की प्रेडिक्टेबिलिटी मैंने ट्रूली मेरे को नहीं दिखी। बट हाँ, एक अच्छी प्रेडिक्टेबिलिटी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। जैसे कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि 60-70%, 70-80% तक हमने देखा है कि 0.8 तक की प्रेडिक्टेबिलिटी हमें इसमें दिखाई दी जाती है। तो सारा खेल है प्रिडिक्शन और सिग्नल्स के। आप कहें तो जो प्रिडिक्शंस हैं और सिग्नल्स हैं उसको मैच करके सारा जो है इसका आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सिग्नल कितना भी हो है ना, अभी दोनों साइड के आप स्टॉक्स देख पाएंगे कि शॉर्ट साइड के कितने हैं, दोनों ही साइड के जो है हमें ये। कोई डाउट हो, आप दोबारा से समझना चाहते हो, आप क्यूएनए सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो जब हम लास्ट में इसको कवर करेंगे क्यूएनए को, तब हम इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। ओवर टू यू बैन। Yeah, and let's see some examples from the last few weeks from the Shoonya platform. We're seeing if we're checking the 3 days time frame, we can see the time frames on the top. We can see the stocks cap. If it's a large cap, mid cap, or small cap, you can choose between the three, and you can choose the time frame. And let's see some performance from the last few days. For example, we can see that the stock AIA Engineering moved 7.18% in a 3 days time frame. We can see Regington stock also jumped by 2.5%, and many other stocks that the algorithm is put in the long position for 3 days that you should buy for 3 days. And that was the performance during those 3 days. After 3 days, we can see the performance here to the right. We can find the signal and predictability to each and every stock here. So the algorithm provides 5 stocks to buy for, sorry, 6 stocks to buy for 3 days time frame. And you can see the excellent performance of this specific forecast. We can see the same thing for the small cap universe. This was 5 stocks that the algorithm provide us, and we can see the returns that they made in this specific week, while the average of this forecast was standing on 4.6%, while the index itself, the benchmark, moved by 0.48%. So the algorithm provide us the best stocks for each and every time frame, and you can switch between the small cap, mid cap, large cap, and the time frames as we can see here, and see the performance is overwhelming in a 7 days time frame. Over to you, Kishore. Yeah. So अगर बात करें हम कुछ
पुराने रिजल्ट्स की कि अच्छी परफॉर्मेंस कैसी रही है. So 10th of November, So I think we cannot hear you that good. Yeah, something with the communication, I think. अगर हम So. देखें three days Yeah, Keshav, something, if you can improve कुछ your शॉट्स जो your सजेस्ट किए connection. गए थे, अगर यहाँ पर आपको 6 को Yeah, I think the into IT there connection. is some disruption. Yeah, Is it fine now? yeah, Yeah. we don't hear you well for some reason. So if you can improve the connection, meanwhile, we will continue. But a quick remark: right now in the webinar chat, we added several important links. The last link include. I see a lot of questions about it, so maybe it's a good time to address it. In the last link, there is the link that you can use in order to subscribe to the basically to the I know first AI algorithm and to get it within your Shoonya account. So because I see those questions, please continue asking questions in the Q&A, but I saw that this question is repeating many times. So just use this link in order to subscribe, and or you can scan the QR code that Ben just shared. So yeah, over to you, Ben. Yeah, we'll continue until Keshav will come back, and let's see some more forecast for 14 days forecast that the algorithm provide, and we can see that the first stock here, Gudari Power and its ORD jumped about 20%, and it's basically had one of the best predictabilities, as we can see here, 0.25. Try to focus on the best predictability. We can also see JSL with a jump of 11% in 14 days. Which also have the highest predictability of 0.3% in this 14 days time frame. Going further for the 1 month prediction, we can also find here many stocks that the algorithm provide us to buy for a period of 1 month. And we can see Tanala with 15%. We can see Adana with 12% here. Also, Tanala has one of the highest predictabilities here. We can have Dixon, what we talked about in past webinars, plenty of time. And it also looks pretty good with 7.75% in 1 month. And this forecast was generated on 24th of August and ended in 24th of September. And we can see that the average forecast, the average performance of this forecast was 5.7%, while the benchmark actually went down by 0.18%. So the algorithm actually provided some interesting opportunities in a going down market for a long. So it's a big advantage of this specific algorithm. And of course, in the Shoonya platform, we're getting long and short opportunities or selling opportunities. So that's helpful as well. And if we can go to the 3 months prediction, so that's a long-term prediction. It was generated on 6th of July. And we can see the returns of the stocks, such as Dixon, such as POLC, CG Power, and many more. And again, the market went down in those days, and all of those stocks have provided a really positive return. So that's a big advantage that we have in the I know first algorithm, and those are large cap stocks. And again, you can choose between the large cap, small cap, mid cap, and the different time frames
in each and every forecast. And if we go even to the 1 year performance, that we have a 1 year forecast, we can find the Terra software with 273%. We can find Vitama Labs with 68%. And we can see that the predictability of those stocks is high. And we can see the signal is very strong. It's interesting to see that the strongest signal from Terra software, while the stock jumped over 273% in a 1 year time frame. That's pretty remarkable. The entire forecast made a performance, an average performance of 34%. That's in a small cap universe, and we're gonna explain you what are you getting in the first service in Shoonya in one more slide. But Keshev is back to us, so I'll let him talk about the forecast, translate the forecast again, and hopefully that we're gonna hear him good now. Keshev, are you with us? Yeah. So sorry for the disturbance. There is some network issue. So हम लोग जो बात कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि पिछले टाइम में आइनोफर्स्ट की परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं. So when can we go to the first slide of the performance where we are showing 3 days performance? The 3 days? Okay. Yeah. We'll start from 3 days. So अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, नेक्स्ट स्लाइड, यस, फ्रॉम हियर ऑन, या थैंक यू. सो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स आइनोफर्स्ट ने सजेस्ट किए थे, सो 10th ऑफ नवंबर की हम लोग बात कर रहे हैं. सो वहां से 6 स्टॉक्स ने जो रिटर्न दिए हैं वो आप देख सकते हैं 0.53% से लगा के 7% तक के रिटर्न जो है वो यहाँ पर आपको स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया था, और अभी कुछ रैली भी देखी गई थी नेशनल एल्यूमिनियम में. सो वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड. 7 डेज के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिड कैप सेक्टर में ही 7 डेज में जो है वो आपको 1.48% से लेके 18% तक के रिटर्न जो है हमें देखने को मिले थे, जिसके अंदर अगर हम बात करें 1.48% का बीएससी ने रिटर्न दिखाया था, मतलब सेंसेक्स का रिटर्न था 1.48% का, और आइनो फर्स्ट की अगर इन स्टॉक्स की सबकी बात करें तो एक 4.66% का एवरेज जो है यहाँ पर रिटर्न देखने को हमें मिली थी. ये 6 सितंबर के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सेम 14 डेज के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि जब सेंसेक्स के ओवरऑल रिटर्न जो थी वो कुछ 0.7% के आसपास थी, उसी दौरान आइनो फर्स्ट का जो एवरेज था वो 4% से ज्यादा का था. अब पिछला हम इसलिए थोड़ा दूर का दिखाते हैं क्योंकि कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, जिसकी वजह से हम आपको रीसेंट प्राइस और रीसेंट वाले प्रिडिक्शंस नहीं दिखा सकते हैं. तो इस वजह से उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें कुछ पीछे के आपको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं. तो इस वजह से आपको पास्ट डेटा हम दिखा रहे हैं. और अगर हम बात करें इन सभी स्टॉक्स की, तो ये सारे स्टॉक्स जो है वो प्रिडिक्ट किए गए थे आइनो फर्स्ट के ऊपर, और 3 डेज से लेके 1 ईयर तक की टाइम फ्रेम के स्टॉक में मैं हर आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आपने इसका यूज करना है ना. आपको 1500 में से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे देगा कि ये 20 स्टॉक्स के ऊपर खरीदना कौन सा है. ये हमारी या किसी रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेकर हम अपनी पोजीशन किसी स्टॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मार्केट
के साथ Okay. आती है। तो Yeah, we're losing you again, मार्केट Keshav. For some में reason, we cannot hear कहीं you ना well. So कहीं I'm suggesting that we हमारी will कैपिटल इन्वॉल्व होती है। तो हमें अच्छा स्टॉक लिटरली आई नो फर्स्ट से चाहिए, तो ऐसे हर एक टाइम फ्रेम में बढ़ते जा रहे हैं ना। 3 डेज में किसी का सिग्नल मान लो 60 है, अगले just I'll rejoin in the session. I'll rejoin the session. You may continue then, Ben. Okay. So you can get all of this in our special webinar still, and how can you actually get the forecast and what do you get? Basically, you get 6 time frames, as we saw, from 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and 1 year. You get the best opportunities for all those 6 time frames on a daily basis. That is updated on the Shoonya platform. You get the large cap, you get the mid cap, the small cap stocks, all the good opportunities from different stock caps in the Shoonya platform. And additional to that, you get the best indices forecast, and we're going to see that soon. On top of that, you get a customized AI-powered forecast of your holdings. And this is all in a special webinar sale for 999 rupee per month. So feel free to join us and get all of those features in the Shoonya app. You just sign in and you get the best opportunities on a daily basis for different 6 time frames, and you can choose and switch between the large cap, mid cap, and small cap universe. You can also find an indices forecast to see which sector or index is the best one to be in for the following month. And after buying those stocks, you get a customized forecast on your holdings, which you can update it and which is updated and you can follow on a daily basis. So scan the QR code and join the service in the Shoonya platform. And I want to show you how exactly it looks like in the platform itself. So after logging in, you're getting the best opportunities in the platform, in the Shoonya platform. Here you can switch between the large cap, mid cap, and small cap, and you get this table on a daily basis. Let's say you want to trade in a shorter time frame of 3 days or 7 days, you can just click on those buttons, and on the forecast that will appear is for the shorter time frame, or you can click on the 1 month or 3 month and get the forecast for the longer time frames. You get 6 time frames, and you can click and switch between them to your wish. Here you can find in the bottom, you can find a past performance and see and review latest forecast that the algorithm provide as well from different time frames. And after, of course, by clicking on a stock, you can see the stock itself, the name of the stock. You can see the stock market that is trading it. You can find the signal. You can see the predictability. You can see the current return of the stock itself, and other features that you have. That is actually trading features that you have in the Shoonya app. It's also available in the I know first feature, so you can buy and sell stock throughout this screen directly, which gives you a big advantage. This is in the AI stock picks. By clicking on the indices, you will see the best indices to be in for the following month, the following 3 days, 7 days, 14 days, and 1 year. You can see all the indices, the main indices.
in India in this screen. By the way, in the end of this webinar, we're going to give you a glimpse of today's forecast for the next month. We're gonna see and what's the algorithm provide us, what are the best indices for the following month. So stay tuned to the Now end you're telling me. I wanted to start with that. Oh, it's okay. yeah, it's a surprise till the end Surprise. of this Okay. webinar. And yeah, Keshav, you're back with us. I can see. Yeah, All right, I let's think hope that. now it's stable. Yeah, our IT support has done something that it would not interrupt again. So Wait yes, 1 second, sorry, Keshav, and I just want to finish the last slide of the holdings that you have. After buying the stock, you can get the forecast to scan, of course, your portfolio and let you know if this stock is good or you have to sell it. You can get signals here. You can see signals if it's green or red, and you can follow and monitor your portfolio. You can, of course, see your gain and loss and the actions. But the main feature here is the signal and predictability. After buying the stock, you get a daily monitoring to your stock to know if it's still a hold or you should sell it or even maybe buy some more by having a positive signal or a negative signal on each and every stock. And of course, also here, you can switch the time frames and to see if you are holding, a long-term portfolio. So go for the 3 month, 1 year, and you can see if your holdings are good for a long term, or if you're holding a short term or more tradable portfolio. You can also check it by clicking the 3 days and 7 days and see which of your stock you should sell or maybe even buy more. So this is all available on the holding feature that you have in the I know first part from the Shoonya platform. All right, so Keshav, let's start from here, I think. okay. So it's a special webinar sale. ठीक है, so वेबिनार सेल में हमें मिल रहा है एआई का डेली फोरकास्ट। डेली बेसिस पर आपको नए स्टॉक्स जो हैं वो एआई सजेस्ट करता है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे स्टॉक्स जो कि हर एक टाइम फ्रेम में रिपीट हो रहे हैं, हर रोज रिपीट हो रहे हैं, जिनकी प्रिडिक्शन सिग्नल्स बढ़ रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स पे हमें अगर नजर रखेंगे तो हमें एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये मैंने खुद टेस्ट करके इस चीज को देखा है कि ऐसे स्टॉक्स जो हर एक टाइम फ्रेम में है या फिर रिपीटेडली आ रहे हैं और सिग्नल्स भी बढ़ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें तो 6 टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक्स दिखाता है, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। सो जितने ज्यादा टाइम फ्रेम में स्टॉक होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, छोटे से बड़े तक, है ना। 1 ईयर में है, 3 मंथ में है, और 1 मंथ में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स में नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लेकिन अगर बड़े में है और छोटे में भी है तो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है पहचानने में। उसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, और सभी इंडाइसेस जो भी मार्केट के लिस्टेड इंडाइसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इंडाइसेस जो ट्रेड नहीं हो सकते उसके ऊपर भी फोकस दिखाता है। तो अब आप फॉर एग्जांपल मान लो कोई XYZ कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल से आ रहा है, और उसको प्रिडिक्शन दिखा रहा है कि इसके सिग्नल्स अच्छे हैं या प्रिडिक्टेबिलिटी भी अच्छी है, और साथ में निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है उसको भी अगर सही बता रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक डबल क्रॉस हो जाता है ना, आप डबल चेक कर लिया उसको कि इंडाइसेस भी ऊपर है, स्टॉक भी ऊपर दिखा रहा है, तो वो वहां पर हमें बेनिफिट हो जाता है। या फिर कहीं पर अगर दिखा रहा है कि स्टॉक अप है लेकिन इंडाइसेस को रेड फ्लैग कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की जरूरत है, थोड़ा बच के हम चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एआई की हेल्प से हमें, ये कुछ इनसाइट्स है जो कि मतलब मैं इतने टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो बेस्ट इंडाइसेस ढूंढ के देता है, एआई पावर्ड फोरकास्ट, हमारी होल्डिंग्स जो होती है उसके ऊपर एआई पावर्ड फोरकास्ट मिलता है, जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसके क्या सिग्नल्स है, उनकी क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो भी ये हमें बता देता है।
तो 999 पर मंथ पर आप इसको यूज कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एक रोज के आप ये समझ लो कि एक चाय के अमाउंट के बराबर है ये, है ना। तो जब बाजार में हमें कोई रिसर्च करके दे रहा है, कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है और उसकी वजह से हम पैसा बना पाते हैं, अगर कुछ कर पाते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो पाती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, हमारी रिसर्च में हेल्प कर देता है। और 999 तो हम ऐसे ही बाजार में हमारा कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस होता है इससे ज्यादा का, इससे 10 गुना ज्यादा तक के स्टॉप लॉस तो छोटे मोटे कंसीडर किए जाते हैं ट्रेडर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है आप यूज कर सकते हैं। और यूज करने का तरीका थोड़ा मैंने आपको बताया है कि कुछ हर एक चीज में ना आपको थोड़ी सी दिमाग लगा के इस्तेमाल करना पड़ता है। वो होता है ना, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो उस तरह का है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको स्मार्टली प्ले करना है। आपको स्टॉक्स सजेस्ट हो गए, अब आपने अपनी रिसर्च करनी है। और अगर दोनों जगह पर, अब देखो आपको 3 फ्लैग मिल रहा है ना, एक ग्रीन फ्लैग मिल गया आई नो फर्स्ट की रिसर्च का, दूसरा ग्रीन फ्लैग मिल गया आपको अपनी रिसर्च का, तीसरा इंडाइसेस से, तीनों चीजें आते हैं तो हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वो कन्विक्शन हो जाती है कि हाँ सही है भाई, हम भी सही सोच रहे थे, ये भी सही सोच रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आई नो फर्स्ट का एक कम्युनिटी ग्रुप है इंडिया का, तो आप ये स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्दर जो भी अपडेट्स होती हैं आई नो फर्स्ट से रिलेटेड, वो आपको इस ग्रुप पर मिल जाती हैं। और हाँ, स्टॉक प्रिडिक्शन नहीं मिलती इसके ऊपर ना, वो आपको आई नो फर्स्ट सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। तो वो थोड़ा सा है चीज जो आपको, एक पेड वर्जन है शून्य का, वो यूज अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आपको पेड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। सो आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे तीनों कैटेगरी में आता है। और डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं जिसके अंदर आप आगे जाते जाते अपने स्टॉक्स को देख सकते हैं, स्टॉक सर्च भी कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं जिसके अंदर आप 3 डेज से लेके 1 ईयर तक की आपको 6 टाइम फ्रेम में मिल जाता है। डायरेक्टली बाय सेल आप आई नो फर्स्ट के वहीं पर ही हमने बटन दे रखा है, आपको कोई स्टॉक, आपको कोई स्टॉक अच्छा लगा है आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर भी वहीं से प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे वो स्टॉक्स थे तो ये अब इंडाइसेस आ गए हैं ना, इंडाइसेस में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में, जैसे 6 टाइम फ्रेम स्टॉक्स के लिए अवेलेबल है, सेम 6 टाइम फ्रेम्स आपको इंडाइसेस के लिए भी अवेलेबल है। तो एनएसई के और बीएसई के इंडाइसेस भी मिल जाते हैं। किसी स्टॉक में आपको कुछ कन्विक्शन दिख रही है, सेम कन्विक्शन आपको इंडेक्स में भी दिख रही है, ये एनो फर्स्ट भी आपको बता रहा है कि इसके सिग्नल्स क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में आपको सिग्नल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रीन फ्लैग होता जाता है ना। और हमें तो क्योंकि कन्विक्शन के ऊपर हम लोग मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं या ट्रेड्स को करते हैं, तो वो वहां हमारी हेल्प हो जाती है। डेरिवेटिव्स के लिए फिलहाल नहीं है, फ्यूचर ऑप्शंस पे अपनी प्रोडिक्शंस नहीं बताना, लेकिन स्टॉक डेरिवेटिव जो ऐसे स्टॉक जो एफएनओ कैटेगरी में है, अगर उसकी कोई आपको यहाँ पर प्रोडिक्शन दिख रही है या सिग्नल दिख रहे हैं, तो हम अपनी रिसर्च उस पर कर सकते हैं। अगर ठीक लगेगा तो हम उसके अंदर अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली हम क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो हमारी होल्डिंग्स होती हैं उसका स्लाइड है। जो हमारी होल्डिंग्स है वो सारी की सारी आइनो फर्स्ट में भी दिखाई देती है, और होल्डिंग्स के ऊपर डेली आपको प्रिडिक्शन और सिग्नल्स दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई रेड फ्लैग आ रहा होगा तो वो भी हमें पता लग जाएगा कि वो कितने टाइम के लिए है, फॉर मीन टाइम है। कोई करेक्शन किसी स्टॉक में हुई है तो वो कितनी लंबी चल सकती है, या वो करेक्शन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी कितनी कन्विक्शन है, वो हम प्रेडिक्टिबिलिटी के हिसाब से पता कर सकते हैं। और अगर किसी स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा तेजी हो चुकी है और अगर हम उसमें एंट्री कर चुके हैं और कहीं फंसने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि हाई रेट्स पे कई लोग फंस जाते हैं, तो ऐसी चीजों को जो है वो हम फ्लैग कर सकते हैं इसके अंदर। ओवर टू यू। As we can see, it's available in the desktop and even in the app. In both ways, you can trade through Iron First signals via Shoonya platform. So this two available for you on the desktop and of course in the mobile itself.
And you can also join, welcome to join to our WhatsApp group, the iKnowFirst community, by scanning the QR code. Join our community, and you get there some interesting AI articles. You get a future forecast and many other interesting things about the Indian market. So feel free to join our WhatsApp group. तो यस, सो शून्य पे आपको आइनो फर्स्ट जो है वो डेस्कटॉप और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। आप beta.shoonya.com अगर आप डेस्कटॉप पे यूज करते हैं तो वहां से देख सकते हैं, और ऐप पर तो मोबाइल ऐप पर आपको हब में जाकर ही मिल जाता है, आपके डैशबोर्ड पे मिल जाता है। सो डेस्कटॉप पे अगर आप डेस्कटॉप यूजर हैं तो trade.shoonya.com पर नहीं है, beta.shoonya.com आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वहां से आप आइनो फर्स्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्टेबिलिटी और सिग्नल्स की, तो दोनों ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रेडिक्टेबिलिटी भी और सिग्नल्स भी। और सेम 6 टाइम फ्रेम आपको डेस्कटॉप और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। सो जो स्टॉक्स आपको ऐप पर सजेस्ट हो रहे हैं, सेम डेस्कटॉप पर भी वही स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। सो इट्स अ वेबिनार सेल, यस, 999 पर मंथ का इसका चार्ज है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह का ट्रायल अवेलेबल नहीं है। सो आपको इट्स अ पेड वर्जन ऑफ फाइनो फर्स्ट, जिसके अंदर आपको सारी ही डिटेल्ड एनालिसिस जो है सभी कैटेगरी के स्टॉक्स के ऊपर आपको मिल जाती है 6 टाइम फ्रेम में। ओवर टू यू। ये हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आइनो फर्स्ट से रिलेटेड सभी फर्दर अनाउंसमेंट्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं, कुछ भी अपडेट्स होती है वो आपको उसके ऊपर मिल जाती हैं। और आप इंडिया में इस ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं स्कैन करके अपने व्हाट्सएप के स्कैनर से। सो Ben, I will request you to please keep this on a screen also for a while. If somebody wants to join, they can. Okay, no problem. All right, so let's talk about the Indian market and what's happening in the last few days and months. And we are seeing that basically the Nifty 50 is gained 10% from the beginning of the year, which looks, and the chart itself looks quite positive in a going uptrend. And we wanted actually to see what the algorithm thinks on the markets today. And here in iKnowFirst, we have a global vision of all the world indices, and we saw some interesting picture in this forecast that we have. This is a forecast from today. It's called the World Indices Forecast, in which we can see more than 175 leading indices around the globe. We have here the different time frames from 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, and 3 months. And what's interesting about it, I marked in yellow the Indian indices that are leading those forecasts, which means the algorithm gives a really positive prediction for the Indian market and for the Indian indices. As we can see here, for example, for the 1 month prediction, the Nifty PSU, the Nifty Financial Index, looks one of the most positive indices in the globe, in the worldwide. And we can see NSTE really positive here, the Nifty 50, and even the best one is really positive. And what's more interesting, we can see, by the way, some other indices, if it's the European indices or Brazil, the Bavespa, or the semiconductors, the American semiconductors. But again, the Indian indices are in the top of those forecasts, and this is a pretty long forecast. I just cut the head of it and focus on the most strongest signal.
We can also find here some volatility in the US markets, the VIX and the VXN, to whom of you that knows those fear indices. But the main issue here is that a lot of the nifty indices and sectors are leading those forecasts for multiple time frames, from the 3 days to 3 months. The Indian sectors and indices looks quite good. Another interesting forecast that we have from today's forecast. This is today's ETF US forecast, and you'll be quite surprised to see the 3 Indian ETF that leading this forecast as well. In the 3 days, in the 7 days, in the 14 days, we're seeing Indian forecast in the top of the list. So the Indian market looks quite positive right now. It might be with some volatility, but in the longer time frames and even in the short time frames, we can find the Indian market pretty positive by the algorithm forecast, as we can see here. And again, in the end of this webinar, we're going to see what are the main indices that the algorithm thinks from the Indian market for the next month. Over to you, Keshav. सो हम बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो क्या मार्केट की कुछ दिनों की रैली रही है वो आप लोगों के सामने है। सो इस टाइम अगर हम मार्केट को देखें तो फिलहाल मार्केट जो हमें लेवल दिखा रहा है, अभी अगर हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देख पा रहे हैं तो हमें निफ्टी पर 7 डेज में, 3 डेज में, 14 डेज में, 1 मंथ में जो है बढ़त देखने को मिल रही थी। तो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर आइनोफोर्स जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि जो एनएससी निफ्टी है वो अपसाइड दिखा सकता है। तो वैसा ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक जो करेक्शन थी उसको छोड़ के अब मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ गया। छोटी मोटी करेक्शंस मार्केट के अंदर आती रहती हैं, वो मार्केट का एक ट्रेंड है चलने का। बाजार कभी भी सीधा सीधा नहीं चलता, बाजार हमेशा फ्लक्चुएट होते हुए ही चलता है। सो डिपेंड करता है हम मार्केट को किस लेवल पर कैप्चर, किस मूवमेंट को किस लेवल पर कैप्चर करते हैं। सो अगर हम आइनोफर्स्ट के साथ देखें तो हमें कुछ मूवमेंट्स पहले पता लग जाती हैं, और अगर हम खुद से प्रेडिक्ट करना चाहें तो हमें कुछ वक्त लग जाता है उन चीजों को प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि मेन चीज है हम इतना लंबा नहीं किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते कि वो पहले कितने पास तक हम देखेंगे। हो सकता है हमने 3 बार कोई ट्रेंड फॉलो कर लिया कि जो फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में हमें कप एंड हैंडल दिखाई दिया, तो कप एंड हैंडल हमने 2 बार देखा लास्ट टाइम कि भाई 2 बार देखा था तो अच्छा चला था, अभी हमने सोचा अच्छा चलेगा, बट कोई भरोसा नहीं है ना, वो 2 बार ही चला हो, उसके पहले 7 बार वो फेल हो गया हो। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो बता देगा कि सिग्नल तो है 100 के, लेकिन जब ऐसे सिग्नल आते हैं तो चलता 0.2 ही है, तो मतलब उसके 20% चांस ही है। तो वो चीजें जो है हमें प्रिडिक्टेबिलिटी में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं कि ईटीएफ्स को, कुछ ईटीएफ्स जो है वो ग्रीन में मार्क है और कुछ ईटीएफ्स जो है वो रेड में मार्क दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पर आने वाले टाइम में कुछ नेगेटिव मूवमेंट्स भी दिखाई दे सकती हैं। सो अगर वहां पर खतरे की घंटी है तो मे भी हमारे हिंदुस्तान के बाजार में भी कहीं ना कहीं कुछ खतरे की घंटी दिखाई दे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। All right, so yeah, again, this webinar, special webinar still, you're getting everything that you saw here. You're getting the 6 time frames. You get the best stocks picks from a large cap, mid cap, small cap.
best indices for trading in different time frames. You got the customized AI-powered forecast to your holdings to monitor all of your positions, and you get all of that for 99 rupee per month. You can cancel it after 1 month. Then you can just try it and see. So feel free to join and try this remarkable technology for the Indian market. सो वेबिनार सेल है हमारी इस टाइम लाइव। डेली एआई फोरकास्ट आपको मिलेंगे 6 टाइम फ्रेम में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर, साथ ही इंडाइसेस के ऊपर भी, और कस्टमाइज्ड एआई पावर्ड फोरकास्ट मिलेगा आपकी होल्डिंग्स के लिए। जो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में रखे हैं, उन शेयर्स के क्या सिग्नल्स हैं, क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो आइनो फर्स्ट पे आप चेक कर पाएंगे। साथ ही इसकी प्राइसिंग रखी गई है 999 पर मंथ, और आपको 999 में एक होलसेल पैकेज मिल जाएगा जिसके अंदर आप सभी कैटेगरीज में जिसको यूज कर सकते Yeah, and you can get there by scanning the QR code that is in your screen. Or also use the link that you can find in the webinar chat right now. Actually, we just placed the link to subscribe. Yeah, you can click on the chat and see the link that we gave you directly to the I know first part in the Shoonya platform. So feel free to do so. We're gonna talk about some interesting stuff that we have also in new stuff that we actually have in I know first. One of them is the AI powered portfolio that we launched in the beginning of April. In this case, the algorithm chooses on a monthly basis, one in 4 weeks. He actually provide you the best 10 assets from the US market. This product has generated 29%. This portfolio has generated 29% from the beginning of April, while the S&P made 18%. It's a remarkable and one of the best products that we did so far. So if you're interested in the US market, feel free to join us in the I know first website. We also have some different packages from the US market, US stocks, of course, from the entire US market. We have the Buzz package that also gives you the most interesting stocks from the Buzz universe, the stocks that everybody talks about that and are mentioned in multiple times in the social media or the digital media. So this specific package is holding the best stocks out of this universe. And of course, we have many other packages in I know first. If it's commodities package or currencies, the world indices that we just saw, if some of you are trading futures or commodities themselves, you can use those forecasts by joining our website and find those different packages. यस। सो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, 999 का इंडिया में है। सो एक एआई पावर्ड पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन मिलता है यूएस स्टॉक्स के लिए। तो वहां पर अगर हम बात करें इसकी, तो $330 पर मंथ का ये सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने के लिए देना पड़ता है। सो अगर रिटर्न की हम बात करें, तो आई नो फर्स्ट की जो रिटर्न रही है वो रही है 29% की। और ये इस पूरे इस दौरान अगर हम बात करें अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल 2025 से अभी तक एस&पी का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 18% का। तो वहां से 10% ज्यादा के रिटर्न जो है वो एआई पोर्टफोलियो ने जनरेट करके दी। सो इस तरह के प्लान्स, इस तरह की रिसर्च जो है वो आपको एआई प्रोवाइड कराता है। सो
आपको जैसा मैंने बताया कि हमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है, लेकिन हमें ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम जिस मार्केट में हैं, अगर हम अदर मार्केट से इंडियन मार्केट को कंपेयर करते हैं, तो हमारी मार्केट कुछ अलग तरह से परफॉर्म करती है ना। तो हमारे मार्केट्स को समझना सारे मार्केट से ज्यादा मुश्किल है, तो हम तो समझ नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट एआई समझे उसकी पूरी प्रिडिक्शंस को, और हमें बताएं कि क्या चीजें हो सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च करके और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि 20 में से अगर दो स्टॉक को ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, तो कहीं ना कोई रीजन तो होगा जो दो को ही पोटेंशियल बता रहा है, बाकी 18 को नहीं बता रहा है। सो हमें उन दो को पहले हमने 20 आइडेंटिफाई कर लिए, 20 में से दो चुनना हमारा काम है ना। तो वो कौन से दो होंगे, वो हम ढूंढेंगे। सो यूएस स्टॉक्स के ऊपर भी परफॉर्मेंस आती है, तो वहां पर भी आप रिटर्न देख सकते हैं। आइनो फर्स्ट का एवरेज जो रहा है वो 9.31% का रहा है, जब एसएनपी ने 0.60% ही परफॉर्म किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वहीं अगर हम बात करें दूसरे तो यहाँ पर भी आइनो फर्स्ट का 3 दिन के अगर प्रोडिक्शन देख रहे हैं हम, तो 4.78% के रिटर्न थे, और एसएनपी ने उस दौरान 1.81% के रिटर्न दिए थे। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम कमोडिटी फोरकास्ट की बात करें, तो कमोडिटी फोरकास्ट में भी 5.98% के रिटर्न दिए, और एटलीस्ट एक दो 10 कमोडिटीज सजेस्ट की थी, जिसमें से 9 ने परफॉर्म किया, एक परफॉर्म नहीं कर पाई। रिजल्ट्स हमारे साथ में हैं, और फ्यूचर फोरकास्ट पे आ जाते हैं। All right, so let's see what the algorithm think about the Indian market for the following months. What are the leading indices? And let's see for today's forecast from the Shoonya platform. We're giving you a glimpse to see what we think, and we do see some interesting stuff here. For example, we can find the Nifty VIX. The volatility of the Nifty is in a high position, which means that we are expecting some volatility, but the majority of the indices are pretty green and with strong signal, such as the Nifty PSU, the Nifty Yali, the Nifty Midcap 100, Midcap 50. We can find in the upper side of the table the Nifty Energy and the Nifty 150 and Midcap 100. A lot of the Nifty indices are in the top and the positive part of the table. We can find the real estate also looking quite positive. So this is the picture for today's forecast for 1 month forward for the Nifty and for the Indian market, basically. So you can find this in the Shoonya platform, but also you can get this for 6 time frames. This is just the 1 month time frame. In the platform, in the Shoonya platform, you can get all 6 time frames in the same cost of 999 rupee per month, and get all the deal that we presented you in this webinar. If it's the best stocks for different time frames, different caps, small cap, mid cap, and large cap stocks from the Indian market, and get the best technology to identify the best opportunities for the Indian market. All right, Keshav, over to you. तो अगर फ्यूचर फोकस की बात करें, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मार्केट में फिलहाल अगर हम देखें, तो इसमें हमें ज्यादातर चीजें ग्रीन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है हमें रेड में भी दिखाई दे रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ इंडाइसेस जो है वो हमें लाइट ग्रीन में भी मार्क दिख रहे हैं। तो हमने अपनी रिसर्च करनी है। अगर हम बात करें हमारी रिसर्च की,
तो हमारी रिसर्च को एक दिशा दिखा सकता है, एक डायरेक्शन दिखा सकता है ना फर्स्ट, कि हमें रिसर्च किस साइड पे करनी है। तो जिस इंडाइसेस में हमें आगे इन फ्यूचर थोड़ा ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वहां पर हमने वो देखना है जहां पर हमें जहां से हमें बचना होगा ना। ऐसे स्टॉक्स जो कि हमारे पोर्टफोलियो में है, उनमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि ज्यादा खराब हो, उसे हम चेक करवा सकते हैं, है ना। कुछ हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो में कमजोर है, और जिसको आइनो फर्स्ट जो है उसके सिग्नल्स और प्रेडिक्टेबिलिटीज जो है वो कुछ फ्लैग दिखा रहे हो। तो वो सारी चीजें जो है हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। All right. So if you wanna join us to our special webinar sale, again, 6 time frames, daily forecast from our algorithm, large cap, mid cap, small cap, the indices forecast that we just seen, but for different 6 time frames, and monitoring your portfolio and your holdings by AI. You get all of that in 999 rupees per month, and try to join us to the new technology revolution of identifying opportunities in the Indian market. This is available to you through the Shoonya platform. Really easy and good handling. With this platform, you can find easily stocks and monitor your stocks that you chose. So feel free to join us by again scanning this QR code and see what are the best opportunities for the next month. And we'll be happy again to answer some of the many questions that we had during this webinar. Yeah, I was trying to address them during the webinar, but let's see if there are any specific questions, additional questions. And by the way, many users joined during the webinar based on the chat here. So let's see. Yeah, what is the most important indicator, signal or predictability? So basically, we're suggesting to use both signal and predictability. Signal in order to identify the opportunity and the direction and the upside or the downside, and predictability in order, basically predictability is very important because it's giving you the confidence level of each forecast. We are suggesting strongly to utilize and to focus on the most predictable assets. Even if you're using it for the short-term trading, we do suggest to utilize the long-term predictions where the predictability is basically has the highest value. And then so the first or the most important tip that we have for you today is to utilize the AI indicators. First predictability and then also the signal. Okay. Do you see additional questions, Ben? Real-time examples. I think we shared during the beginning of this webinar, we shared few live predictions and real-time examples. A lot of people joined the service through the webinar. Nice to hear. Yeah, we talked about signals, we talked about the time frames. Yeah, another question, by holding the portfolio. After you buying the stock through the platform, in the holding section, you can get the forecast about the stocks that you just bought. This is a really good monitoring tool, because after buying a stock, you could always know and get a daily updated
if the stock is still good to hold, or you should sell it. So it's actually monitoring your portfolio, and besides giving you the best opportunities, also helping you to see if the opportunity is still good, or you should keep maybe keep holding it, or maybe sell it, or even buy more. So again, you get the signals and predictability also in your holding section. Yeah, Okay. and again, So, yeah, please, Yaron please, sir, let me clear some doubt in our yes, local language also, please, because yeah, some of them are waiting for the reply of their yes, questions. of course. यस सो काफी लोगों के बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हम लोग देख पा रहे हैं Q&A सेक्शंस में. सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आई नो फर्स्ट है, वो पहली चीज तो ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ठीक है. दूसरी चीज है, मिनिमम 3 डेज का हम लोग टाइम फ्रेम लेके चलते हैं. 3 डेज से लेके 1 ईयर तक की प्रोडिक्शन ये दिखाता है 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव में फिलहाल अवेलेबल नहीं है. इट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी ओनली. और आप ऐसे स्टॉक्स जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिनके हैं, उनको रिसर्च कर सकते हैं आप. इसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च उस पर लगा सकते हैं. देन फिर हम बात करें पेमेंट्स, तो यस, इसका कोई ट्रायल वर्जन नहीं है. इट्स कंप्लीटली पेड फीचर. आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 999 पर मंथ, 999 रुपीज पर मंथ पर. और सभी कैटेगरी के स्टॉक्स में ये आपको बताएगा, अपनी प्रेडिक्शंस देगा. अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, कि एक वेबिनार आपको लोकल लैंग्वेज में चाहिए, तो ओके, हम लोग एक वेबिनार जो है वो लोकल लैंग्वेज में करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और डेट्स आपको मिल जाएंगी मेल के ऊपर, और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आप तक पहुंचा देंगे. प्राइसिंग इसका यस 999 प्लस 18% जीएसटी लगता है. उसके बाद हाँ, ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है एवरी मंथ. आई थिंक मैंने कुछ आपके आंसर्स कर दिए हैं. अच्छा, कंपैरिजन ऑफ प्रेडिक्शन वर्सेस एक्चुअल अवेलेबल. ओके, सो कंपैरिजन ऑफ प्रेडिक्शन में In the प्रेडिक्ट तो perform, actually, in the performance tab, you can find यस, there like, ये आपको परफॉर्मेंस टैब में यूज चेक कर सकते हैं जो प्रेडिक्शंस हमने किए हैं और उसके एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस रही है, वो आपको परफॉर्मेंस टैब में मिल जाएगा. आई नो फर्स्ट ने जो प्रेडिक्ट किया था उसका रिजल्ट क्या रहा. सो अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं प्लीज, हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे इस टाइम. मैंने अपना पर्सनल आपको बताया है कि जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो स्टॉक्स अवेलेबल है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में जो अवेलेबल है, उसको आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा. और ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको, जिनकी सिग्नल्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेगुलर जो अपडेट हो रहे हैं, मतलब ये डेली बेसिस पे अपडेट होता है. रोज मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले आपको आइनो फर्स्ट जो है वो अपडेटेड मिलेगा. नए शेयर्स भी उसमें ऐड होंगे, लेकिन जो पिछले दिन के जो शेयर्स थे, अगर तो वो उसमें से हट चुके हैं तो इट मींस कि वो रेड फ्लैग है ना. लेकिन अगर कोई शेयर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, तो उनको आप तो चेक कर सकते हैं. अगर उसके सिग्नल्स बढ़ रहे हैं, उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी बढ़ रही है, तो इट्स ग्रीन फ्लैग के आप उसके अंदर अपनी और रिसर्च कर सकते हैं. लेकिन कंप्लीटली आपने इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, कहीं ना कहीं आपने अपनी रिसर्च को जरूर रखना है. सो जो, अगर आप देखना चाहते हैं हाउ टू यूज आयनो फर्स्ट का एक वीडियो भी है हमारा शून्य के यूट्यूब पर, तो मैं उसका लिंक जो है वो चैट में प्रोवाइड कर देता हूँ. सो आपको वो मिल जाएगा कि आपने उसको किस तरह से यूज करना है. तो वो एक हेल्प हो जाएगी आपकी, जिन लोगों को भी ये है कि
इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एक YouTube वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और एक नया YouTube वीडियो भी हम बनाकर इस पे जल्दी डाल देंगे, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। Yeah, what time of the day the predictions get updated? Every day, basically, when you're logging in to your platform to the platform in the morning, you're supposed to get an updated forecast, so you have a very good reason to connect to the Shoonya app every morning, right, Kashiv? Yes, it will be updated between 4 to 5 a.m. So मार्केट ओपन होने के पहले आपको ये मिल जाता है। आपको आप सुबह 7 बजे 8 बजे कभी भी चेक करेंगे तो आपको अपडेटेड स्क्रिप्ट्स जो है उसमें मिल जाती है। सर, इट्स अ डिस्काउंटेड प्राइस फॉर फिनवेशिया यूजर्स ओनली, बिकॉज ये बाहर और कंट्रीज में तो बहुत महंगा है। इट्स स्पेशल वेबिनार सेल प्राइस ओनली। 999 for a month is a very discounted price. So it's a very costly product if you want to use it, but for Finvesia users you get it at this price only. कोई आपका और क्वेश्चन हो तो यू में प्लीज राइट ऑन द Q&A सेक्शन, सो हम उसको देख लेंगे। Yeah, it's updated once in a day only, early morning before market opens. Yes, it's updated once in a day only. रियल टाइम पे अपडेट नहीं होता है, प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स अपडेट नहीं होंगी, प्राइसिंग आप रियल टाइम के देख सकते हैं। जो एलटीपी आ रहा होगा दैट्स ऑफ रियल टाइम, बट मार्केट में जो प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स हैं वो स्टैटिक है। जो एक बार अपडेट हो गया वो फिर नेक्स्ट डे ही जाके उसको चेंज होगा। ठीक है, वीडियो हम एक और इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो इसका बना के डाल देंगे, सो आपको उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे। All right, I think we answered a lot of questions, still many more, but feel free to ask us through the Shoonya platform, and we hope that you enjoyed this webinar, and we want to say thank you very much to you, Keshav, for translating and going through the webinar with us. So thank you very much, and thank you very much, Yaron. Thank you, Ben. Thank you, being Ben, with us for in the this webinar. Yeah, thank you, Ben and Yaron sir, for this amazing product for the market, for the Indian market. And we have more and more questions, but we try to answer most of the questions. जो भी आप लोगों के सवाल हैं आप हमें क्वेरी पे कर भी सकते हैं, और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू यारोन सर फॉर दिस ग्रेट प्रोडक्ट फॉर द इंडियन मार्केट। Product literally, it's a good product for the market and for the retailers too. Actually, this type of product are used by hedge funds only, but now it's for retail clients too. So at this on our Finvesia platform, so on Shoonya. So we would request everyone to please check it once, and if found very suitable, then you go for it. Thank you very much, Yashav, as always. Thank you for the great webinar, and please take care. Thank you. Thank you. Okay. All right, bye bye, guys. Okay, bye bye. Thank you, guys. Bye bye. Thank you. Thank you, everyone.